हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट दुटा पार्ट रे आम बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करथिले तार डिफरेंट कांसेप्ट विषय रे डिस्कस करथिले ता रिलेटेड किछि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करथिले। आज तार नेक्स्ट कांसेप्ट जोटा कि रिटर्निंग बिल और डिजॉनर ऑफ बिल विषय डिस्कस करिवा। तो वीडियो को एंजॉय देखंतु, भलो लागिले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु। चलंतु अब डिस्कस करिवा रिटर्निंग ए बिल अंडर रिबेट। रिटर्निंग बिल अंडर रिबेट आगुरी आम ऑलरेडी आम ऑर्डिनरी बिल पढ़ी सारे, डिस्काउंटिंग बिल पढ़ी सारे, एंडोर्समेंट बिल पढ़ी सारे, बिल सेंड फॉर कलेक्शंस पढ़ी सारे, जो बिलटा होल्डर पाखे रोला ड्रयर पाखे रोला। जब डिस्काउंटिंग बिल कौन थी ना, जितने आमको ड्रयर इमरजेंसी पैसा दरकार होता सी जाकि बैंक जाऊला, बैंक बिफोर ड्यू डेट जाकि पैसा आनुला, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन कौन बैंक पाक पठे दूला सेफ्टी पाई। या जदि एंडोर्समेंट या क्रेडिटर को दबार था, सी गोटे थर्ड पार्टी को दबार था, से बिलटा ट्रांसफर करूला क्रेडिटर को। बट रिटर्निंग बिल अंडर रिबेट ये जो तीनटा केस रे कहली से तीनटा जाक केस रे ड्रयर करथिला। बट अबिका रिटर्निंग बिल अंडर रिबेट रे कौन हुए बेले बेले कौन हुए ड्रई बिफोर ड्यू डेट से पेमेंट देवा को चेष्टा करे। ओके सपोज एग्जांपल तारा मार्च रे ड्यू थिला, बट से जनवरी 2 मास पूर्व से पैसा दे देवा को चेष्टा करे। तो सेतेबेले से कौन करे ड्रयर पाख आसिक पहुंचे और ड्रयर को किसी रिबेट अलाउ करे। सपोज तारा बिल वैल्यू 10,000, सपोज से डिस्काउंट अच्छी 1,000 से मागुची कहीं बिफोर 2 मंथ से पेमेंट देवा को चेष्टा होची। आ सेही जदि नेट वैल्यू ड्रयर रिसीव करछि से जो प्रोसेसटा होछि से प्रोसेसटा को हमें कौन करथौ ना रिटर्निंग बिल अंडर रिबेट। ओके तो देखिए कौन लिखा है ना, समटाइम्स द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल मे ऑफर टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू द होल्डर बिफोर द ड्यू डेट। बेल बेल कौन हुए एक्सेप्टर जे बिल को एक्सेप्ट करता है ड्रॉई से कौन कर ऑफर करता है जे मु बिफोर ड्यू डेट पेमेंट देवा को कोई। तो प्रोवाइडेड इज अलाउड सम रिबेट से ताको किछि रिबेट देवा को से कहता है। रिबेट मतलब डिस्काउंट जोटा कि ड्रॉई पई गेन हबो और ड्रॉयर पई लॉस हबो। ओके इफ द होल्डर ऑफ द बिल एक्सेप्ट द ऑफर एंड रिसीव द नेट वैल्यू ऑफ द बिल, जदि से ऑफर टाको ड्रॉयर एक्सेप्ट करे और नेट वैल्यू अमाउंट टाको से रिसीव करे। सपोज बिल रो वैल्यू था 10,000, 3 मास परे से 10,000 रिसीव करता, बट बिफोर 2 मंथ्स से 10,000 रुपया रिसीव करछि। से 10,000 ऊपर से किछि अमाउंट रिडक्शन करिया को चाहछि, सेही प्रोसेस टाको हमें कोन करथौ ना डिस्काउंटिंग बिल अंडर रिबेट। ओके बाय इज कॉल्ड रिटर्निंग बिल अंडर रिबेट। ओके तो जो रिबेट अलाउ कला कि अलाउ करिवो ना ड्रॉयर अलाउ करिवो। ड्रॉयर पे सेटा गोटे लॉस आउ ड्रॉई सेटा रिसीव करे, ड्रॉई पे सेटा गोटे गेन। ओके ड्यू डेट पूर्व जेहेतु ड्रॉयर पाखु पैसा आसी जाउछि तो ये ऑफरटा किए देला ना ड्रॉई देला। तो बिफोर ड्यू डेट जदि आसिक ड्रॉई पेमेंट करछि ड्रॉयर को आउ ड्रॉयर टाको एक्सेप्ट करछि, से प्रोसेस टाको हमें कहू रिटर्निंग बिल अंडर रिबेट। ओके तो अभी का जनरलिटी लिखिबा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर। तो ड्यू डेट दिन जब पैसा स्टैंडर्ड पूरा ड्यू डेट दिन तो आम कौन लिखते कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल जो बिल रिसीव फेरी अभी आम किसी अमाउंट रिडक्शंस कले। फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल कॉस्ट 10,000 बट आम रिसीव कले 9,500, आम डिस्काउंट है 500। ओके तो आम से लॉस ऑलवेज डेबिट। तो एंट्री कौन लिखा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ओके इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई कौन हम अभी से बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करछे, बिल्स रो वैल्यू थिला 10,000 जोरा कि तार फेस वैल्यू, बट सी नेट पेमेंट कला 9,500 और 500 कोन देला रिबेट रिसीव कला तामन तापै सेरा कोन ओटा इनकम ऑन गेन्स ऑलवेज क्रेडिट। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर में एंट्री करिवा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर रेकॉर्ड करिया ना बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश टू रिबेट, जेहतु तार इनकम है इनकम ऑलवेज क्रेडिट। ओके तो बिफोर ड्यू डेट जो हमें पेमेंट कला ड्रॉय पेमेंट कला से जो प्रोसेसटा बा डिस्काउंटटा रिबेटा पाइला सेटा को किए अलाउ कला एक्सेप्ट कला, ऑफरटा किए एक्सेप्ट कला ना ड्रॉयर जो एक्सेप्ट करियो ताको किछि रिबेट अलाउ करियो तो से प्रोसेसटा को हमें कहबा रिटर्निंग बिल अंडर रिबेट। ओके चलो रिटर्निंग बिल रे प्रॉब्लम सॉल्व करिवा। On May 11, 2020, Jackson draws a bill on Roxan's for rupees 12,000 payable after 4 months. जैक्सन कौन करला रक्सन आर गोटे बिल प्रिपेयर कला जो कि 12,000 अमाउंट रो रक्सन कहला 4 मंथ्स पर पैसा देबी। आज पर द एग्रीमेंट 6% पर एनम रिबेट इज अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट ऑन द बिल। एग्रीमेंट है जदि तुम जल्दी पेमेंट करिवो तो तुम बिल ऊपर 6% कौन दिया रिबेट दिया। ओके तो दीटा कंडीशंस अच्छी। रक्सन रिटायर्ड द बिल ऑन जून 14, 2020 और सेकेंड रक्सन रिटायर्ड द बिल ऑन जुलाई 14, 2020। ओके तो दीटा कंडीशंस है केते कौन डिस्काउंट मिलो आम कैलकुलेट करिया। ओके तो फर्स्ट देखिए ऑन द मे 11, 2020 जैक्सन ड्रॉज ए बिल। तो ये जैक्सन होची ड्रॉयर और रक्सन होची ड्रॉइंग। ओके तो बिल प्रिपेयर करछि तो एक्सेप्ट किए देबो ना रक्सन देबो
तो आप होची बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कार्ड एक्सेप्ट कले ना रॉक्सन्स टू रॉक्सन ओके बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 4 months बिल तेरेला 4 मास पाई ओके कोदिन ना मे 11/5/2020 ओके तो अभी क्या कौन 11/5/2020 4 मास थिला ओके 11/5 4 मास बिल तमाने 11/9 3 दिन ग्रेस पीरियड 14/9 तमाने 14 सेप्टेम्बर से पैसा दबार थिला बट सी कोन कि जून 14 रे देछि तमाने जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 3 मास पूर्व देछि हमर मे मास थिला मे मास जून त गोटे मास परे से हमको बिल दे देछि बट तार बिल जो पेमेंट करछि बिफोर 3 मंथ 3 मास पूर्व से बिल पेमेंट करछि तमाने से 3 मास कोन पाइबो डिस्काउंट पाइबो ओके से एक्चुअली बिल पेमेंट करता 14 सेप्टेम्बर रे बट से पेमेंट करदेला 14 जून रे ओके तमाने जून रो जुलाई जुलाई रो अगस्त अगस्त रो सेप्टेम्बर 3 मास रो से कोन पाइबो रिबेट पाइबो तो फर्स्ट कंडीशन एरे इटला रॉक्सन रिटेल द बिल ऑन जून 14 2020 दा लिखिया 14 जून 20 रे जदि बिलटा से की पेमेंट देला तो केतना डिस्काउंट मिलिबो तो हम एंट्री को लिखिबा कैश लिख परिबा कैश अकाउंट डेबिटेड रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल कैश अकाउंट डेबिटेड रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स इशू कॉस्ट दिला किता हम 12000 रो बिल प्रिपेयर करथिले तो फास्ट एंड डायरेक्टली बिल्स इशू अकाउंट डेबिटेड ऑप्शंस अब ऑप्शन कलो 1 मंथ परे पैसा देला तमाने 3 मास बिफोर से पेमेंट देछि से पेमेंट देटा 14 सेप्टेम्बर रे बट 14 जून रे से दे देला ओके तो ताको 3 मास रो डिस्काउंट मिलिबो 12000 ऊपर तो कैलकुलेशन देखि परियो 12000 into 6% into 3/12 ओके 12000 रो 6% काहे कि बिल ता ड्रॉ इतला 12000 रो 12000 6% 6/100 जेतु से बिफोर 3 मंथ्स देछि तो 3 मास ताको डिस्काउंट मिलिबो चोरे काटली 2 00 कट 120 2 रे काटली 60 180 रुपीस 180 रुपीस ताको कोन रिबेट मिलिबो तो बिल सिस्टम कॉस्ट ला 12000 ताको 180 रुपीस कोन मिला रिबेट मिला तो माने 11820 रुपीस से रिसीव करिबो के रिसीव कर ड्रॉ रिसीव करे being bill rebate at 6% per annum okay second conditions b second condition kon dechi Roxanne retired the bill on July 14 2020 जदि से 14 जुलाई रे 14 जुलाई 2020 रे जदि बिल पैसा दिथांदा त सेति हमें कोन अमाउंट पैथांदे ना कैश अकाउंट डेबिटेड रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल बिल्स कॉस्ट होची 12000 अभी का हमको कौन मिलिबो 2 मंथ्स डिस्काउंट जेहेतु 14 सेप्टेम्बर हवा करा से 14 जुलाई रे दे देला तमाने 14 जुलाई रो 14 अगस्त टू 14 2 मास पूर्व देछे तमाने ताको 12000 रो 6% into 2/12 तो 6 रे काटिले 2 कैंसिल 0 कैंसिल 120 रुपीस ताको कौन मिलिबो रिबेट मिलिबो तमाने से नेट केता अमाउंट देबो 11880 being bill rebate at 6% per annum clear that line the books of drawer आगे कौन इटला ना जैक्सन्स नारे बिल ता ड्रॉ कराइटला 4 मंथ्स पाई कोडिन ना 11 मई 2020 रे तो सेटला में एंट्री कले बिल सिस्टम अकाउंट डेबिटेड टू रॉक्सन्स 12000 ड्यू डेट पर्यंत हम वेट करते हमको पैसा मिलता बट सी कौन करछि रॉक्सन कौन करछि बिफोर ड्यू डेट आके हमको पेमेंट करछि कंडीशन देला जदि 14 जुलाई 2020 रे से पेमेंट करो तारा रिबेट अमाउंट केते जदि 14 जुलाई 2020 रे पेमेंट करो तारा रिबेट अमाउंट केते ओके तो 12000 थिला जदि 14 जून 2020 रे करो तारा रिबेट अमाउंट थिला 180 रुपीस जोटा ड्रॉयर पे लॉस तो बिल सिस्टम थिला 12000 ताबाको नेट वैल्यू असला 11820 जदि सेम बिल ता जदि 14 जुलाई रे करतंदा त माने आउट 2 मंथ्स लग तो ताको 2 मंथ्स रिबेट मिला 2 मंथ्स रिबेट होची 120 एते 3 मंथ्स रिबेट मिला 180 एते 2 मंथ्स रिबेट मिला 120 ओके अब या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ करिबा तो 11 मई 2020 एक्सेप्टेंस देतला काको ना जैक्सन को तो जैक्सन्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल ओके 12000 being acceptance given
acceptance given for 4 months. Then से कौन करते हैं फर्स्ट कंडीशन रॉक्सन रिटर्न द बिल ऑन जून 14 से फर्स्ट यदि पेमेंट करें ताकर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 20 टैगेस्ट कौन है ना बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड पेमेंट कला कैश पाइब रिबेट ओके आर रिबेट होना इनकम ऑलवेज क्रेडिट बिल्स पेबल कॉस्ट 12,000 सी रिबेट ये आम रिबेट के 180 रुपीज तो 180 रुपीज रिबेट तो मैंने कैश पेमेंट कर 11,820 being a bill rebate at 6% per annum. Next 14 July 2020 जब बिलटा 14 जून न देखी 14 जुलाई रे पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट एंट्री हमारे सेम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू रिबेट बिल्स पेबल अमाउंट 12,000 रिबेट 120 रुपीज तमने नेट हमें पेमेंट करवा 11,880 ओके बीइंग ए बिल रिबेट at 6% per annum. ओके ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग तो आम रिबेट केस रे कौन एंट्री करूँ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर ना कैश अकाउंट डेबिटेड रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर कौन करिया ना बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू रिबेट ओके तो ये रिटर्निंग बिल अंडर रिबेट रो सब चलतु नेक्स्ट डिस्कस करिबा डिसऑनर ऑफ ए बिल बिलटा डिसऑनर हला त माने ड्यू डेट दिन ड्रॉई कौन कला पैसा दे पाला नहीं तो से जो बिलटा पूरा पेमेंट दे पाला नहीं से बिलटा को हमें कौन कहता डिसऑनर कहता ओके बिलटा पेमेंट हो गला हमें ऑनर्ड बिल कहता जब से ड्यू डेट दिन फेल पेमेंट दे पाला नहीं से बिलटा को हमें कौन कहता डिसऑनर ऑफ ए बिल ओके If the acceptor of a bill fails to make payment of a bill on due date, the bill is said to be dishonor. Acceptor की ना ड्रॉई यदि ड्यू डेट दिन पैसा न दे पाला से बिल टाक आम कह डिसऑनर अच्छा ड्रॉयर अबिका पैसा रिसीव करते ना कि ड्रॉई कौन कला ड्यू डेट दिन पैसा दे पाला ना तो अभी कौन ड्रॉयर को पैसा मिलनी तो ड्रॉयर कौन कर इमिडिएटली से बिल टाक कौन कर नोटारी को पठेदेव ओके तो नोटारीटा से बिल एगेंस्ट गोटे प्रूफ रहा जे से बिलटा एक्चुअली डिसऑनर है तो से ऑथेंटिकेशन का प्रूफ देला जे से बिलटा कौन है डिसऑनर है से जो नोटारी जो स्टेटमेंट लिखिबो ताको हमें कौन कहते नोटिंग ऑफ द बिल ओके राइटिंग द स्टेटमेंट ऑन द डिसऑनरिंग ऑफ ए बिल बाय नोटारी इज नोन एज नोटिंग ऑफ द बिल तमाने ऑथेंटिकेशन देला प्रूफ देला से बिलटा कौन है डिसऑनर है ओके तमाने की देबो एटा नोटारी देबो तो सेति पे नोटारी ओटे कौन करियो फीस कलेक्ट करियो ताको हमें नोटिंग चार्जेस कहताओ इनिशियली सेटा पे करियो ड्रॉयर बट सेम अमाउंट कौन करियो ड्रॉय टू से कलेक्ट करताओ से जो बिलटा को बा फीटा को कौन को जाय नोटिंग चार्जेस ओके When a dishonor bill is noted by notary, a fee known as noting charges become payable to the notary. जो बिलटा डिसऑनर ला बा बिलटा जो नोटारी पाखे जो बिलटा रहा जो प्रूफ रहा ऑथेंटिकेशन रहा जे बिलटा डिसऑनर होली तो तापे से कौन कर नोटारी फीस कलेक्ट कर से फीसटा को कौन कहला नोटिंग चार्जेस कहला ओके से नोटिंग चार्जेसटा इनिशियली किए पे करियो ना ड्रॉयर पे करियो बट सेम अमाउंट से कार्ड कलेक्ट करियो ड्रॉय को जेटू ड्रॉय पैसा नहीं पारनी सेठी ड्रॉयर से रहउची भूल तो इनिशियली ड्रॉयर पे कर देबो किंतु से अमाउंट से कार्ड कलेक्ट करियो ड्रॉय टू कलेक्ट करियो ओके येटला डिसऑनर बिल कोन ड्यू डेट दिन जदी ड्रॉय पैसा न दे पेला से बिलटा को हम डिसऑनर कहबो आमर ऑथेंटिकेशन प्रूफ है आम से बिलटा को ड्रॉयर कौन कर इमिडिएटली पठेदेव नोटारी को नोटारी गोटे स्टेटमेंट लिखो से स्टेटमेंट को आम कहवा नोटिंग ऑफ द बिल आउ तापे से गोटे फीस कलेक्ट कर नोटारी से फीसटा को आम कहवा नोटिंग चार्जेस ओके से नोटिंग चार्जेस इनिशियली ड्रॉयर पे कर बट सेम अमाउंट ड्रॉय टू कलेक्ट कर तो ये बिल आम कह डिसऑनर बिल चलतु नेक्स्ट डिस्कस करवा डिसऑनर बिल जर्नल एंट्री आमर जो बिलटा डिसऑनर है डिसऑनर पर आम कौन एंट्री पास करवा ऑलरेडी फास्ट आम कौन एंट्री करते जदि आम गुड्स फास्ट सेल करते क्रेडिट रे तो सेल्स एंट्री करते देन जो बिल प्रिपेयर करते तार एंट्री करते देन ड्यू डेट दिन आमको जना पड़ा बिलटा कौन है डिसऑनर है तो सीटा आम कौन जर्नल एंट्री पास करवा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर when the bill is written by the drawer till maturity and is dishonor आमे ड्यू डेट पर्यंत बिल टा पाखे रखी और ड्यू डेट दिन जना पड़ा से बिल कौन है डिसऑनर है तो से आम कौन करवा एंट्री पास करवा ना ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीव्ड टू नोटिंग चार्जेस ओके फास्ट आगे जानिए जब हमको कैश आस जाए तो आम कलेक्टेड कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीव्ड
बट अबिका कौन है बिलटा कौन डिजनर तो अबिका बिल शिड्यूल को आम कौन करा कैंसल करवा एगेन क्या डेबिट करा ड्रॉय को डेबिट करा ड्रॉय आम रोचे कस्टमर एगेन कस्टमर को आम कौन करा डेबिट करिया तो एंट्री कौन पास करिया ड्रॉय अकाउंट डेबिटेड टू बिल शिड्यूल जदि बिल से नोटिंग चार्जेस मेंशन अच्छी तो मुझे कही इनिशियली कौन हम नोटिंग चार्जेसटा कि पे कर ड्रॉयर पे कर बट सेम अमाउंटा कलेक्ट करदेव काटू ड्रॉय ठार तो सीटा आम कौन करा ड्रॉय अकाउंट को डेबिट करवा टू बिल शिड्यूल सपोज बिल शिड्यूल अमाउंट होची 5000 नोटिंग चार्जेस 100 तो आम ड्रॉय टू कलेक्ट करिया 5100 ओके सेठी को नोटिंग चार्जेस इफ नोटिंग चार्जेस पेड कराइथिबो जदी क्लियर ओके ये थिला आम बिलटा आम पाखे थिला बेले आम बिलटा कौन कर डिस्काउंट करते बिलटा डिस्काउंट कौटी कटे ना बैंक रे तार बिलटा आम कौटी अच्छी बैंक रे अच्छी तो अबिका आम जो बैंक टू बिलटा डिपोजिट करके अगेंस्ट पैसा नहीं आसते तो एंट्री कौन पास करते ना बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल तमार बिल शिड्यूल कैंसल सरी से बैंक को पैसा नहीं बैंक अकाउंट डेबिटेड अब या ड्यू डेट दिन जना पड़ा ड्रॉय पैसा दे पार ना तो डिस्काउंटिंग बिल डिजनर एंट्री कौन करवा ना ड्रॉय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक जेहेतु से बैंक को डेबिट करते बैंक को कौन करा क्रेडिट करा कैंसल एगेन ड्रॉय को डेबिट करा कहीं ड्रॉय अबिका पैसा दे पाला ना सब कंडीशन में ड्रॉय को आम डेबिट कर कहीं ड्रॉय हूँ आम कस्टमर सी ही पैसा दे पाला एगेन ताकू आम कौन करा डेबिटर डिक्लेयर करिवा ओके नेक्स्ट व्हेन एंडोर्स बिल इज डिजनर जदि बिल आम इमिडिएटली ट्रांसफर कर थर्ड पार्टी को तो आम से कौन लिखले एंडोर्स सी अकाउंट डेबिटेड टू बिल शिड्यूल तो बिल शिड्यूल कैंसल सरी अभी आम एंडोर्स सी को डेबिट करते राइट बट ड्यू डेट दिन जना पड़ा जे कौन ला ड्रॉय पैसा दे पाला ना तो से जो एंडोर्स सी को डेबिट करते अभी एंडोर्स सी कौन करवा क्रेडिट करवा तो एगेंस्ट डेबिट क्या करिया ना ड्रॉय तो ड्रॉय अकाउंट डेबिटेड टू एंडोर्स सी नेक्स्ट व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज डिजनर जो बिल आम बैंक फॉर कलेक्शन में पठे देते फॉर सेफ्टी रिजन अब से बिलटा कौन है डिजनर होगा ओके तो आम एंट्री कौन कला ना ड्रॉय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन कहीं आम बैंक फॉर कलेक्शन को कौन करते डेबिट करते ये भी कौन हम नोटिंग चार्जेस हम टू बैंक लिखा नोटिंग अमाउंटा पे करवा ओके तो से नोटिंग अमाउंट आम कार्ड कलेक्ट करवा ना ड्रॉय टू कलेक्ट करवा ओके ये चार्टा कंडीशन थिला तो सब कंडीशन आम कौन कर ड्रॉय को डेबिट करछे आउ बिल शिड्यूल जदि आम बिलटा आम पाखे अच्छी तो बिल शिड्यूल को क्रेडिट करवा जदि बिलटा डिस्काउंट हो तो बैंक को क्रेडिट करवा जदि बिलटा ट्रांसफर हो थर्ड पार्टी को तो एंडोर्स को क्रेडिट करवा जदि बिलटा सेंड करते कलेक्शंस बैंक फॉर कलेक्शन तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर बट सब कंडीशन में ड्रॉय को डेबिट करवा कहीं ड्रॉय आमको पैसा दे पाला ना एगेन से कौन डेबिटर डिक्लेयर हुआ ओके तो सब जाक कंडीशन में ड्रॉय गोटे एंट्री पास करवा जेहेतु से ड्रॉय पैसा दे पाला ना ड्यू डेट दिन ओके तो चार्टा का कंडीशन से आम गोटे एंट्री पास करवा से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड क्या बिलटा कैंसल होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करिया और जब नोटिंग चार्जेस ये पे कराई आम कार्ड कलेक्ट करा ड्रॉय टू कलेक्ट करवा तो ड्रॉय पैसा गोटे कौन एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करिया सपोज 5000 और नोटिंग चार्जेस यदि 100 तो ड्रॉय को आम देवा 5100 ओके तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय गोटे एंट्री पास करवा चार्टा का कंडीशंस में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉयर ओके तो ये डिजनर बिल जर्नल एंट्री चलतु अब गोटे डिजनर बिल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा इनफॉरमेशन देछि ऑन 1st April 2020 रोहित ड्यू ए 2 months बिल ऑन अमर फॉर रुपीज 8000 1st April 2020 रे कौन कला रोहित 2 months रोटे बिल प्रिपेयर कला अमर ना रे 8000 रुपीज आफ्टर एक्सेप्टेंस द बिल वाज डिस्काउंटेड बैंक 6% पर annum अमर एक्सेप्ट कर सारा इमिडिएटली कौन कर रोहित नहीं बैंक रे डिस्काउंट कर देछि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रे द बिल वाज डिजनर ड्यू डेट दिन बिलटा डिजनर होछि आ नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक और बैंक पेमेंट करछि नोटिंग चार्जेस ओके तो अभी कौन करवा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर रेकॉर्ड करवा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय भी रेकॉर्ड करिया तो ऑन 1st April 2020 रोहित कौन कर ड्रॉ कर 2 months बिल ऑन अमर अमर ना 2 months गोटे बिल प्रिपेयर कर 1st April 2020 तो बिल एक्सेप्टेंस के देव ना ड्रॉय आप कौन आसला बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉय ड्रॉय किए ना अमर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अमर अकाउंट अमाउंट होची 8000 ओके being acceptance received for 2 months being acceptance received for 2 months okay से कौन करछि इमीडिएटली लेकी बैंक रे डिस्काउंट करछि आफ्टर एक्सेप्टेंस तो 1st April 2020 लेकी बैंक रे डिस्काउंट कर जाइछि तो हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल तो एंट्री में कौन कियो ना बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल
बिल शिशुर कॉस्ट होची 8000 बट हमको डिस्काउंट कर हमें 2 मंथ्स बिल थिला तो 2 मंथ्स हमको डिस्काउंट मिलियो 6% रे तो माने 8000 6% into 2/12 ओके 8000 6% 12 6 रे काटिले 2 2 2 कट 0 0 कट तो 80 रुपीस हमको कोनला डिस्काउंट मिला ओके तो माने बिल बैंक को आसीला 7920 being bill discounted at bank being bill discounted at bank तापर अभी कोन ड्यू डेट दिस इज द बिल वाज डिजनर ऑन द ड्यू डेट कोड नबो 2 मास थिला तो 4 6 2020 4 जून 2020 ओके जेटू 2 मास 4 2 6 3 दिन ग्रेस पीरियड 4 6 2020 कोन हला बिलटा डिजनर ला अभी का बिल हमर कोड थिला ना बैंक रे अछि तो अभी का कोन हम जो बिल सिस्टम को डेबिट करथले बिल सिस्टम क्रेडिट कर दीचे अभी क्या सेटा डिस्काउंटिंग बिल था या एंडोर्समेंट बिल था हमें सब केस में कोन करा ड्रॉय को डेबिट करिया ड्रॉय किए ना अमर अगेन हमको अमर पैसा देवर अछि तो अमर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक जेहेतु बैंक रे बिल था एटी बैंक में डेबिट करथले बैंक को क्रेडिट करिया ता सरे उठे देखा नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक नोटिंग चार्ज देछि तमने अगेन हमें बैंक 200 रुपीस कम करे क्रेडिट करिया तमने टोटल अमाउंट 8200 बिल कॉस्ट थिला 8000 और नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 200 तो 8200 तमने हमें अमर टू कलेक्ट करिवा 8200 बीइंग बिल डिजनर on due date being bill dishonor on due date okay फर्स्ट कौन करथिला ना रोहित कौन करथिला अमर नारे ओटे 2 मंथ्स रो बिल प्रिपेयर कला जार वैल्यू थिला 8000 तो हम एंट्री पास कले बिल सिस्टम अकाउंट डेबिटेड टू अमर इमीडिएटली कौन करछि अमर जाई कि ताको बैंक रे डिस्काउंट करके पैसा नै आछि तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रो एंट्री कोन ना बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल सिस्टम कॉस्ट होची 8000 बट हमें 2 मंथ्स रो बिल को डिस्काउंट कले डिस्काउंटिंग चार्जेस थिला 6% पर एनम तो हमको 6% वर्ष को मिलियो तो हमें बट 2 मंथ्स रो बिल थिला तो 8000 6% 2 मंथ्स तो 80 रुपीस होता डिस्काउंट तमने बैंक हमर आसिला 7920 बट ड्यू डेट दिन अमर कोन कला पैसा दे पाला नै से बिल ता कोन ऑनर हैला नै तो से बिल को हम कोन को डिजनर तो डिजनर एंट्री कोन करिवो डिस्काउंटिंग बिल डिजनर तो ड्रॉय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अभी क्या नोटिंग चार्जेस गोटे 200 रुपीस पेमेंट करथिला नोटिंग चार्जेस 200 रुपीस पेड बाय बैंक ओके तो 200 रुपीस गोटे नोटिंग चार्जेस थिला से 200 रुपीस टा की कर बैंक पे करछि तो बैंक इटे 8000 प्लस 200 तो 8200 क्रेडिट हैला से 8200 हमें कार्ड कलेक्ट करियो ना ड्रॉय टू कलेक्ट करियो तो सेटियो ड्रॉय को कोन करा डेबिट कराला अमर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ओके नेक्स्ट अभी क्या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय रे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय 1 अप्रैल 2020 रे ये अभी अकाउंट दबा एक्सेप्टेंस दबा जेटू रोहित अमरनाथ बिल प्रिपेयर करछि तो कहा को एक्सेप्टेंस दबो रोहित को तो रोहित अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल ड्रॉयर पे जोटा बिल्स रिसीवेबल ड्रॉय पे सरा बिल्स पेबल बीइंग acceptance given for 2 months okay amount is 8000 next ये बिल टा ने डिस्काउंट करथिला किए ना रोहित ड्रॉयर ने डिस्काउंट करथिला बैंक रे बट तार कोनसी इफेक्ट हबोनी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर रे कोनसी इफेक्ट हबोनी तार डायरेक्ट हमें ड्यू डेट जे अप्लाई करियो ड्यू डेट दिन से कोन कला पैसा दे पाला नै किए ना अमर पैसा दे पाला नै तो हमें कोन एंट्री पास करिवा ड्यू डेट दिन 4/6/2020 तो अभी के जो बिल्स पेबल को क्रिएट करथली बिल्स पेबल को कोन करा डेबिट करिया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड अमाउंट होची 8000 नोटिंग चार्जेस आटू कलेक्ट कराबो आप गोटे एक्सपेंडिचर नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200 टू कौन करिया ना ड्रॉयर को क्रेडिट करिया ड्रॉयर किए ना रोहित टू रोहित अकाउंट 8200 तामाने अमर अभी का और रोहित को दबार अछि 8200 बीइंग बिल डिजनर ऑन ड्यू डेट ओके फर्स्ट हमें एक्सेप्टेंस एंट्री कले जोटा कि रोहित अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल ड्यू डेट दिन अमर कौन कला पैसा दे पाला ना तो से हमें एंट्री कौन पास कले बिल्स पेबल को कैंसिल करिवा ऊपर क्रेडिट ला तो कैंसिल ला डेबिट नोटिंग चार्जेस अमाउंट भी पे करिया 200 रुपीस टोटल रोहित को अभी क्या बा ड्रॉयर को हमें केते क्रेडिट करिवा 8200 तो ये थिला डिजनर रा एंट्री चलंतु डिजनर बिल अभी का और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिवा
On October 1, 2020, A drew a bill 2 months on B for rupees 20,000 and sent to his banker for collections. October 1, 2020 रे कौन कला A कौन कला B नार गोटे बिल प्रिपेयर कला 2 months बिल जार वैल्यू थिला 20,000 और इमीडिएटली B रिसीव कला पर ताको कौन करछि बैंक फॉर कलेक्शन में पठे देछि. The bill was dishonored on due date दिन बिल टा डिजनर रहिछि and noting charges paid by A amount to rupees 50. और नोटिंग चार्जेस किए पे करछि ए पे करछि इनिशियल तो ड्रॉयर पे करिवो और टाटू ड्रॉय टू कलेक्ट करिवो. ओके तो हमें अक्टोबर 1 2020 रे फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करिवा. फर्स्ट अक्टोबर 2020 जेतले ए बी रे बिल प्रिपेयर करे तो कोन आसे ना बिल शेड्यूल. तो बिल शेड्यूल अकाउंट डेबिटेड टू कार्नर बिल प्रिपेयर करछि टू बी. बिल शेड्यूल अकाउंट डेबिटेड टू बी. ओके बीइंग acceptance received for 2 months. Okay already goods sold सॉरी सोल्ड जनरल में पास कर दीजिए. अक्टोबर 1 डायरेक्ट हमें बिल जो ड्रॉ कले तार एंट्री पास कले बिल शेड्यूल अकाउंट डेबिटेड टू बी. से कौन करछि इमीडिएटली जब कौन करछि बैंक फॉर कलेक्शन पठे देछि. तो 1/10/2020 रे हमें बैंक फॉर कलेक्शन एंट्री करिवा. बैंक फॉर कलेक्शंस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल. हम पाखे बिल थिला तो बिल हमें सेंड कर देले. तो कलेक्शन तो अमाउंट थिला 20,000. तो बैंक फॉर कलेक्शन पे 20,000 जो बिल कॉस्ट थिला 20,000. ओके बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस. ओके फर्स्ट हमें एक्सेप्टेंस रिसीव कले 2 months बिल तो हमें एंट्री पास कले बिल शेड्यूल अकाउंट डेबिटेड टू बी. देन से बिल टा कौन कले हमें ट्रांसफर कर देले कोटी के बैंक को फॉर कलेक्शन करिया पे. तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल. तापर कोन हिची बिल टा कोन हिची डिजनर हिची ड्यू डेट केबे ना 1/10 देछि. तो 4/12/2020 पूरा अक्टोबर गला नवंबर गला डिसेंबर 3 दिन होचे ग्रेस पीरियड. तो 4/12/2020 रे कोन हला बिल टा डिजनर हला. तो अभी क्या हम बिल का रिसीवेबल टा कोन हिची क्रेडिट कैंसिल हिची. तो हमारा बिल टा का पर होचे बैंक फॉर कलेक्शंस पे. तो हमें कौन करिवा ताकू क्रेडिट करिवा ड्रॉय अकाउंट को डेबिट करिया. ड्रॉय किए ना बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शंस. बैंक फॉर कलेक्शंस बैंक फॉर कलेक्शन लिखिवा 20,000. ओके नोटिंग चार्जेस पेड बाय ए जेटू बिल टा बैंक रछि सेटो अबिका बैंक को क्रेडिट करिवा. नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज और टोटल अमाउंट को डेबिट करिवा 20,000 50 रुपीज को कौन करिया बी अकाउंट को डेबिट करिया. बीइंग बिल डिजनर ऑन ड्यू डेट. बीइंग बिल डिजनर ऑन ड्यू डेट. ओके तो फर्स्ट हमें एक्सेप्टेंस रिसीवेबल एंट्री कले बिल शेड्यूल टू बी. देन बिल टा इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते कलेक्शन पे. तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल शेड्यूल ड्यू डेट दिन कौन है से बैंक फॉर कलेक्शन बिल टा कौन है डिजनर है. ड्यू डेट दिन ड्रॉय पैसा दे पाला नाइ. तो हमें अगेन ड्रॉय को डेबिट करिया. बैंक फॉर कलेक्शन ऊपर जेटी डेबिट करले ताको सेटी की क्रेडिट करके कैंसिल करले. देन कौन नोटिंग चार्जेस टा पेड बाय ए करतला सेटी को बैंक को हमें क्रेडिट करले जेटू बिल टा बैंक करतला. ओके नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय. ड्रॉय हमें रिकॉर्ड करिया 1/10/2020 रे एक्सेप्टेंस देला काको ना ड्रॉयर को. A account debited to bills payable amount which is 20,000 being acceptance given for 2 months. Being acceptance given for 2 months. Okay. ये कौन करता ड्रॉयर कौन करता बिल को सेफ्टी रीजन पे बैंक फॉर कलेक्शन में पठे देला. तो ड्रॉय सहित कौन लिंक नहीं. तो ड्रॉयर कौन एंट्री हम नहीं इफेक्ट हम नहीं. ड्यू डेट दिन कौन है ड्रॉय पैसा दे पाला नहीं. तो से दिन एंट्री आम करवा 4/12/2020. तो ये कौन है बिल्स पेबल को कौन करवा डेबिट करा मैंने कैंसल कले. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000. नोटिंग चार्जेस टा कलेक्ट करवा. आप नोटिंग चार्जेस ये पे कर आप एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट टू ड्रॉयर को क्रेडिट कर टू ए. ड्रॉयर को क्रेडिट करिए 20,000 50 रुपीज. बीइंग बिल डिजनर ऑन ड्यू डेट ऑनर ऑन ड्यू डेट. ओके
आगे 1 अक्टोबर 2020 रे बिल एक्सेप्टेंस देला तो आम एंट्री लिखले ड्रॉई अकाउंट सॉरी ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल बा ड्रॉयर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल देन ड्यू डेट रे से पैसा दे पालानी तो आम बिल्स पेबल को कैंसिल कले नोटिंग चार्जेस को डेबिट कले और ए अकाउंट में ड्रॉयर को अगेन ताको क्रेडिट कले तो ये थिला डिजनर बिल एंट्री। आई होप आप वीडियो भल लगी आ किसी वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड करथिबो। आज ये वीडियो माध्यम आम बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिजाइनर ऑफ बिल कॉन्सेप्ट विषय डिस्कस कले रिलेटेड किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कले जदि ए रिलेटेड आपनकर डाउट हो तो मते कमेंट सेक्शन में पचार पारे। और नेक्स्ट पार्ट रे रिन्यूअल ऑफ बिल विषय डिस्कस करिवा।